This is your daily election show and I'm Vikram Chandra. We are in South Delhi, which is actually an easy place to be because this is exactly where the Editor-G office is. We have a bunch of very special interviews for you, all the candidates effectively in South Delhi. Ramesh Biduri is going to be joining us. Vijender is going to be joining us, Boxer Vijender as he's called on Twitter. And we're going to have Raghav Chadda coming right here to the Editor-G office for an episode of Editor-G Cafe. But before I go to any of these people, let's quickly show you all the big election-related news stories of the day. The Supreme Court has asked the Election Commission to decide on 9 pending complaints against Prime Minister Narendra Modi and BJP Chief Amit Shah before it hears the matter again on May 6th. The EC told a bench headed by Chief Justice Ranjan Gogoi that it has already decided on 2 out of the 11 complaints which were filed by the Congress against Modi and Shah over their election rule violation. On Wednesday, the EC gave a second clean chit to Prime Minister Modi for his appeal to first-time voters by invoking the Balakot airstrikes. Priyanka Gandhi, the Congress leader in charge of Uttar Pradesh, has clarified her purported comment that her party has fielded weak candidates. Her comment comes after Samajwadi Party leader Akhilesh Yadav contested Priyanka Gandhi's claim of fielding candidates who would chew into BJP's vote share but not hurt the Gathbandhan. I would rather die than benefit the BJP. And I have made it extremely clear that in all my research and in all the work that we have done to choose candidates, we have chosen candidates that are either fighting very strongly or cutting the BJP vote. Finance Minister Arun Jaitley on Thursday hit out at Congress General Secretary Priyanka Gandhi over her vote cutter remark. Jaitley said that it's a confession from the Congress that it's not a main player in the elections and is now officially a fringe party. The grand old party of Indian politics is now a fringe organization. Union Minister Smriti Irani hit out at Priyanka Gandhi Vadra, saying she will ask all cultured families to keep their children away from the Congress General Secretary after a video showing a group of boys purportedly making derogatory remarks and using abusive language during a poll campaign surfaced on social media. The video, which has gone viral on social media, shows Priyanka stopping the children from using derogatory remarks against the Prime Minister. Congress General Secretary Priyanka Gandhi's assertion that the party has deliberately fielded weak candidates in some seats in UP to cut BJP votes has not found any favours with the SP chief Akhilesh Yadav. Speaking to ANI, Akhilesh has said that he doesn't believe Priyanka's comment as no party fields weak candidates. मैं इन बातों पे यकीन नहीं कर सकता हूं कि कोई भी कांग्रेस ने कैंडिडेट ऐसा दिया हो जो वीक दिया हो. कोई पॉलिटिकल पार्टी ऐसा कैंडिडेट नहीं देती है. The Indian Armed Forces received a free hand to respond to external threats during the term of the Congress-led UPA as well, and the BJP's attempt to gain electoral mileage from the military operations are shameful and unacceptable, former Prime Minister Manmohan Singh has said. In an interview to Hindustan Times, Singh said that multiple surgical strikes took place during our tenure too. For us, military operations were meant for strategic deterrence and giving a befitting reply to anti-Indian forces, rather than to be used for vote-garnering exercises. Dubbing former Prime Minister Manmohan Singh's claims of having conducted several surgical strikes as unknown and invisible, Finance Minister Arun Jaitley said the Congress was afraid of celebrating the diplomatic victory and was thus making claims of having conducted surgical strikes. Earlier, in an interview with the Hindustan Times, Singh had said that surgical strikes were conducted by the UPA government too, but were not used for electoral gains. Jaitley said the Congress was claiming surgical strikes now only to save political face in light of Azhar's listing as a global terrorist. Okay, let's dive into South Delhi now and the problems of South Delhi. I know many people in other parts of the country will say South Delhi doesn't really have any problems. Look what we have to deal with. But hey, having said all of that, there is the air, there is the pollution, iron lungs, that's what we've got. All lungs made of suspended particulate matter, which is probably worse. So those are some of the questions that all the candidates are being asked. We caught up with all of them on the campaign trail. Let's start off with the present MP. Ramesh Biduri of the BJP. What's he telling voters? What are they asking him? Here's our special interview with Mr. Biduri. इस बार की जो बैटल है साउथ दिल्ली में काफ़ी बड़े बड़े स्टार्स भी हैं सामने. विजेंद्र सिंह हैं कांग्रेस के, राघव चड्ढा हैं आम आदमी पार्टी के. तो क्या लगता है क्या होने वाला है, क्या आपकी एक्सपेक्टेशन है इस बार वोटों के लिए? देश को आज़ादी हुए 70 साल हो गए हैं. दक्षिणी दिल्ली के रहने वाले जो 20 लाख वोटर हैं, 35 लाख नागरिक हैं, क्या उनमें से एक भी इस लायक नहीं था कि यहाँ से रिप्रेजेंटेशन के लिए इन पार्टियों के पास लोग आएँ?
तो दक्षिणी दिल्ली के लोगों का दोनों पार्टियों ने अपमान किया है कि एक को नई दिल्ली से अशोकनगर राजेंद्र नगर से भेजा और एक को हरियाणा से भेजा है। तो कहीं यहाँ पर कोई फैशन डिजाइनिंग का शो नहीं हो रहा है कि स्टार आएंगे। सेवा भाव से काम करने वाले लोग होने चाहिए। सेवा भाव जिनके अंदर होगा वो काम करेंगे। और राजनीति जो सत्ता भोग का नियम बना रखा था 65 साल में कांग्रेस ने, अब नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वो सेवा भाव है, सत्ता भोग नहीं है। तो क्या लगता है आपके 3 क्या वादे होंगे यहाँ की जनता के लिए, क्या आप क्या करेंगे? पानी की बड़ी गंभीर समस्या है। प्रधानमंत्री जी ने अपने संकल्प पत्र में कहा है 2025 से पहले हर किचन में पानी देंगे। वो भी एक अगर लॉ बनेगा तो हमें फ़ायदा होगा। दूसरी, ट्रांसपोर्टेशन जाम में बहुत बड़ा लगता है। 4th फेज़ की मेट्रो रोक रखी है केजरीवाल ने। पहले 100 दिन के अंदर अंदर उस 4th फेज़ की मेट्रो को प्रयास करेंगे चलवाने का काम। तीसरा, अनियमित कॉलोनी में लोग नार के जीवन जी रहे हैं। न गंदे पानी की निकासी है और न सड़कें हैं, उनको मूलभूत सुविधाएं नहीं है। 4 साल से केजरीवाल बेवकूफ़ बना रहा है। इन अनियमित कॉलोनी के लिए भी कहने कि पार्लियामेंट में लॉ लाना पड़ेगा। एक बहुत बड़ी समस्या है जो साउथ दिल्ली में बहुत होती है, वो है पोल्यूशन की। आप क्या करेंगे उस बारे में? पॉल्यूशन के बारे में सरकार जब तक ये केजरीवाल की रहेगी तो एक वही अपना आप में पॉल्यूटेड वायरस है केजरीवाल। तो जहाँ पर वायरस इस प्रकार के ज़्यादा हो जाते हैं, पॉल्यूशन ज़्यादा हो जाता है। कुछ भी किसी फील्ड में काम नहीं किया उसके लिए होगा। पहला लक्ष्य होगा केजरीवाल की विदाई, उसके बाद दिल्ली के वातावरण को ठीक करना पड़ेगा। एक और सवाल, केजरीवाल जी ने बोला और आम आदमी पार्टी जी का मोटिव इस बार ये है कि फुल स्टेटहुड फॉर दिल्ली। आप लोगों ने भी शायद उसको सपोर्ट किया था 2014 में। ये कभी भी 4 साल से कहाँ फुल स्टेट था केजरीवाल का? 2015 में लड़ने से पहले क्यों स्टेट फूड क्यों नहीं था केजरीवाल का? वो व्यक्ति ये बोला करता था, शीला जी इस सरकार को चलाने में तुम लाचार हो तो क्यों दिल्ली की जनता का दोहन कर रहे हो, रिजाइन कर दो। अब मैं केजरीवाल से कहता हूँ 4 वर्ष में तुमने 70 वायदों में से 7 पूरे नहीं किए। आप दिल्ली की जनता का दोहन कर रहे हैं। आप अगर लाचार हैं तो रिजाइन कर दो, दोबारा स्टेटहुड के नाम से आ जाना, दोबारा चुनाव जीत कर। अभी 7 के 7 चुनाव हो जाते। और राइट टू रिकॉल के लिए आपने कहा था, निगम आप हारे, यूनिवर्सिटी के चुनाव आप हारे, और अब कह रहे हो कांग्रेस गठबंधन कर लो कांग्रेस के। इसका मतलब उन्होंने मान लिया वो हार रहे हैं। उन्होंने, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने बहुत कोशिश करी गठबंधन बनाने की, जो नहीं हुआ। इससे बीजेपी को कितना फायदा होगा? बीजेपी को ये मिलकर लड़ते तो ज़्यादा फायदा होता, दोनों एक्सपोज हो जाते। आम आदमी पार्टी के साथ कुछ ईमानदार लोग लग गए थे बेचारे। इस मानसिकता के साथ भ्रष्टाचार खत्म करने व्यक्ति आएगा। षड्यंत्र जो कर रहा था केजरीवाल, वो व्यथित थे बेचारे जब ये मांग कर रहा था कांग्रेस कांग्रेस कांग्रेस। तो वो व्यथित होने के कारण जोर शोर से बीजेपी के साथ आते। और कांग्रेस जिसको चोर बताता, जो नीचे का कार्यकर्ता चोरी नहीं कर रहा था, कांग्रेस की लीडरशिप चोरी कर रही थी सभी स्कैम के अंदर, वो नीचे का कार्यकर्ता बड़ा व्यथित था बेचारा कि हमें चोर बताया जा रहा है। तो जो हमें चोर बताता उसके साथ जाएं, वो नहीं जाते कांग्रेस के, वो भी हमारे साथ आते, उससे हमें ज़्यादा फायदा होता। एक आखिरी सवाल, आपके खिलाफ राघव चड्ढा जी ने बोला है कि क्रिमिनल केस है, प्रॉब्लम चल रही है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? पिछले चुनाव में इन्होंने यही इशू बनाया था, उसके खिलाफ केजरीवाल डिफॉर्मेशन भुगत रहा है, 10,000 रुपये की जमानत पर है। मेरे केस में उसने जमानत ली है, जेल नहीं गया। पिछली बार नौटंकी की थी एक केस में कि मैं जमानत नहीं लूँगा, अंदर चला गया था। इस बार जमानत क्यों ले ली? तो पिछली बार भी इन्होंने ये बवंडर बचाया था कि मेरे खिलाफ 10 मुकदमे दर्ज हैं। जब मैंने डिफॉर्मेशन के खिलाफ मानहानि का मुकदमा किया, जो केजरीवाल भुगत रहा है, 5 साल पेश नहीं कर पाया। जमीन पे वो है नहीं, जमीन पे ना होने के कारण से मीडिया में जगह बनाने के लिए इस प्रकार की नौटंकी कर रहे हैं। तो इस बार क्या एक्सपेक्टेशंस है? पिछली बार 1,07,000 से जीते थे। दक्षिणी दिल्ली की सम्मानित जनता के आशीर्वाद से ये मार्जिन डबल होगा। इस बार मोदी जी की लोकप्रियता पहले से ज्यादा बढ़ी है। But Mr. Biduri is really up against both the Aam Aadmi Party and the Congress because they couldn't get an alliance together. Otherwise, his life would be a lot more complicated than it is. So we did speak both to the Aam Aadmi Party and to the Congress. Let's start with the Congress. The challenger to Mr. Biduri here in South Delhi, a very well-known face to all Indian sports lovers. Boxer Vijayender Singh, here's what he told us. He's been a champion on the field, in the ring, and now he's trying to be a champion outside in a political ring as well. विजेंद्र, सबसे पहले ये जो डिसीजन था कंटेस्ट करने का लोकसभा इलेक्शंस, ये कैसे हुआ? जी, बहुत सारी चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती, भगवान के हाथ में होती हैं, ऊपर खुदा के हाथ में होती हैं, तो हो जाती हैं। जो मौजूदा हालात हैं, जो इस मुल्क के, उससे तंग आकर, उससे परेशान होकर आई थिंक एक लोग डिसीजन लेते हैं, तो उस तरह का डिसीजन था मेरा भी। रिंग में आपने इतने सारे मेडल जीते हैं एमेच्योर में, और फिर प्रोफेशनल बॉक्सिंग में भी आप अनबीटन रहे हैं, तो क्या लगता है यहाँ पे भी एक अनबीटन स्टार्ट मिलेगा? यस सर, व्हाई नॉट। और लोग पसंद करते हैं, लोग प्यार करते हैं, और बड़ी बड़ी बातें नहीं करता मैं जो हूँ आपके बीच का हूँ, और मैं बोलता हूँ कि भैया तुम्हारे वादे हैं, आप मुझे बताइए, जो आपके मसले हैं वो मुझे बताइए। और एक बात हमेशा बोलता हूँ मैं, भैया खुशी में हर एक कोई शामिल होता है, हम गम में शामिल होने आए हैं। तो ये बात है जो हम लोगों को कहना चाहते हैं।
आपके जो ओपोनेंट्स हैं राघव चड्ढा जी आम आदमी पार्टी के और बीजेपी के जो बिदूरी साहब हैं वो ये कहते हैं कि आप एक पैराशूट कैंडिडेट हैं, आपको यहाँ उतारा गया है, आप बाहर से, आप आउटसाइडर हैं। हाँ आउटसाइड, हाँ कोई कनाडा से आया हूँ यार मैं तो ये तो सब हो जाती चीज़ें, लोग बोलने वाले हैं, बोलते रहेंगे, लोगों का काम है बोलना। ये बेचारा ड्राइवर का बेटा यहाँ कैसे पहुँच गया, ये गांव से निकला और यहाँ इस दिल्ली में चुनाव लड़ रहा है, तो कैसे हो सकता है ये। तो बहुत सारी लोगों को ये चीज़ खलती है, वो कहते कि भैया इनका ड्राइवर का बेटा तो भैया ड्राइवर ही बने और मज़दूर का बेटा साला मज़दूर ही बने। इस तरह की सोच वाले लोग हैं जो मैंने देखे हैं अभी राजनीति में। तो बट इस सोच को चेंज करना हमें जवाब देना पड़ेगा कि भैया ना, ड्राइवर का बेटा ड्राइवर ना बने, मज़दूर का बेटा मज़दूर ना बने, वो भी डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, प्रधानमंत्री बने। तो इस तरह के सपने हैं वो लोग देखें तो बेहतर होगा। और जो बोलने वाले हैं भैया वो तो टांग अड़ाएंगे, बिकॉज प्रॉब्लम तो सबसे ज़्यादा उन्हीं को होती है। एक बहुत बड़ी समस्या है दिल्ली की, क्योंकि आप दिल्ली में रहते हैं, आप दिल्ली के निवासी हैं, पोल्यूशन की, उस बारे में क्या सोचा आपने? पहली बार किसी पार्टी ने इस एनवायरनमेंट के बारे में बात की है कि जो दिल्ली की हवा है, जो जहर घुल रहा है, उसके बारे में बात की, वो कांग्रेस पार्टी है। आपको ही मालूम है, क्योंकि बड़ी बड़ी बातों से पेट नहीं भरता भैया। आप देखिए यहाँ पे कितना बड़ा पोल्यूशन का जो स्तर है, बहुत 350-400 चला जाता है। तो आने वाली पीढ़ी हमारे लिए बहुत ख़तरनाक इन चीज़ों से, उनके लिए बहुत प्रॉब्लम हो गया आने वाले टाइम पे। तो आप भैया एक इनिशिएटिव चलाइए जो पहले चला था शीला जी के टाइम पे, हरी दिल्ली क्लीन दिल्ली। ऑल्सो एक अलायंस की बात हो रही थी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की, अगर वो हो जाता तो क्या आपको लगता है आपके जीतने के चांसेस बढ़ जाते, या जो नहीं हुआ क्या आपको लगता है उसकी वजह से आपके जीतने के चांसेस कम हुए हैं? एक सॉन्ग याद नहीं आ रहा है, कुछ ये होता तो ऐसा होता, कुछ समथिंग लाइक दैट, कुछ एक सॉन्ग है, कुछ ऐसा होता। तो भैया ऐसा होने से ऐसा हो जाता है, ऐसा होने तो काल्पनिक बातें हैं, हुआ तो नहीं ना। अभी क्या है, हम फाइट कर रहे हैं, मैं अकेला फाइट कर रहा हूँ, कांग्रेस अकेले, अपना आम आदमी पार्टी अकेली फाइट कर रही है, बीजेपी अकेली फाइट है, तो दैट्स फाइन। सो क्या हुआ, तो हम लड़ रहे, पर वो कोलैबोरेशन हो जाता या गठबंधन हो जाता, ये चीज़ें हो जाता तो हुआ तो नहीं ना। तो मैं इन चीज़ों में बिलीव नहीं करता, जो अभी रियलिटी है उसके ऊपर बात करें। आपकी बॉक्सिंग के बारे में अगर बात करी जाए तो इसके बाद अगर मान लीजिए आप एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाते हैं तो क्या आप कंटिन्यू करेंगे अपनी बॉक्सिंग? जी बिल्कुल, पार्लियामेंट में बॉक्सिंग करेंगे। फिर मैं सोच रहा हूँ जो ज़्यादा, मैं कई बार देखता हूँ न्यूज़ चैनल की, कितनी झूठ बोले, कितनी बकवास कर रहे हैं, तो कई बार दिल करता है कि एक पंच तो दे ही दें। तो हमें अगर मौका मिलता है मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कि भैया 1-2 बार हो ही जाए पार्लियामेंट में भी। And let's now end with the Aam Aadmi Party's candidate Raghav Chadha, whom we did persuade to come to the Editor G office right here in South Delhi. We made him sit in the Editor G cafe and a bunch of people asked him questions. Here's what they said to him, here's what they asked him, here are his replies. Elections obviously are on. Yes. How sad and disappointed are you that you actually could not get this alliance going with the Congress party? Actually, I'm neither sad nor disappointed. The idea behind contemplating this whole thing of having an alliance with the Congress was that the anti-BJP vote in Delhi should not get split, plain and simple. The idea was to save this country, to save democracy, to save India's constitution from this anti-democratic dictatorial duo of Mr. Modi and Mr. Amit Shah. And in order to ensure that, we wanted to pit only one candidate against the Bharatiya Janata Party's representative. That was what we were trying to do. Unfortunately, the Congress wasn't willing to play ball with this idea. So, Raghav, your party has made full statehood for Delhi as a main poll plank. So, every election needs one big idea, one catching slogan. So, you think this full statehood will have a kind of emotional connect or this thing with the voters? Because on the other hand, you have this nationalism and security and big slogans from the BJP You see, and full others. statehood has been a very important promise that all political parties have made to the electorate of Delhi. In 2004, 2009 and 2014, in all these 3 Lok Sabha elections, the BJP and the Congress had this promise in their manifesto. Now the Aam Aadmi Party is saying that, look boss, if you give us 7 seats, we will give full statehood to Delhi, and we are even committing ourselves to a deadline. How can you give full statehood to Delhi if you have even 7 seats? Because it's not your decision to take at the end of the day. You'll have to persuade the central government in Well, there were 4 MPs of the TRS and they got a full state. They got a new state carved out of a big state. So therefore, 7 MPs will play a very big role in the composition of the upcoming Lok Sabha. If there is a fractured mandate and BJP says, we will give you full statehood, will you support BJP? Look, we have said this on a number of occasions.
that any political party that is on the verge of forming a government and needs our support, apart from a BJP-led government, will get our support in case they give full statehood to Delhi. BJP, I personally feel, is not even willing to contemplate with this idea of giving full statehood. In fact, their state president, Mr. Manoj Tiwari, who is a sitting MP from Delhi, went on record and said that full statehood will not even be a part of our manifesto. But he's asking a specific question. I would say, in case worst case, the BJP agrees, says you support us. Let's say they are short of 7 seats. Well, we have ideological and pathological hatred for the BJP, so there will not be any. So alliance. there will be no alliance. There will even be if no there alliance is with a the BJP, promise not of with the full state. BJP. Convince me that you will be able to find a solution to air pollution, and in a time-bound manner. Because nothing much has happened in the last few years. I fully agree. I think what Aam Aadmi Party has been able to demonstrate, we have been able to demonstrate in the last 4 years, is that we recognize this health emergency. We recognize that there is a big problem that needs to be solved, and we have offered some solutions. Let's first understand the problem. Air pollution is not a Delhi-specific issue. Air pollution is a North India issue. And air pollution doesn't understand territorial boundaries. So what I'm trying to say is that whether it's movement of trucks, whether it's burning of stubble, so on and so forth, these are not Delhi-specific issues. Vehicular traffic is actually only a 17% contributor towards the larger problem of air pollution. So that's the genesis of the problem. Now let's come to what the Aam Aadmi Party can do. Aam Aadmi Party has shown its commitment towards battling with this problem. We have come out with various innovative solutions like odd and even scheme, like banning burning of leaves, banning construction activities, artificial rain, putting air purifiers in areas like the ITO crossing, so on and so forth. But these are short-term measures. You could do a lot more for construction dust, you could do a lot more to clean up the streets. Absolutely, and it is being done. Because sometimes people feel that the Aam Aadmi Party tends to say, well, what can we do until full statehood does? It's the we can't do anything about it, somebody else has to fix the problem. Let me put it like this. The air pollution problem can be solved. It can be solved if all stakeholders sit together and find a solution. If the Aam Aadmi Party were to concentrate only and only on air pollution, even then we may not be able to solve this problem, because Haryana, Punjab, Rajasthan, UP, these are big contributors towards the air pollution problem in Delhi, and therefore a solution can be found. We have written to the Union Environment Minister, who also happens to be an MP from Delhi, that you hold a meeting, invite all environment ministers, all stakeholders, we'll sit together and find a solution. Maybe even written But then it should be your priority to push that, right? Oh, we have been. Your constituents are the ones who are suffering. Absolutely, and in fact, there was one meeting convened by the Honourable Minister in which all environment ministers were called. Only one showed up. That was our minister. The Haryana, the BJP, the Punjab, the Rajasthan environment ministers didn't even come for the meeting. So all I'm trying to say is that we recognize that it's a big problem. We have solutions. We will be working on that, but we need support from all stakeholders. And that's this special edition coming to you from South Delhi. Now, by the way, voters in Delhi and the NCR, when any Neta comes to you asking for your vote, do remember to ask them, what are they going to do about the air? Because the air that you're breathing is lethal. You can manage with a lot of other things, not having access to them. You can't live without breathing. Ask them what they're going to do. Tell them your vote could depend upon it. And that's it for now. We'll be back tomorrow.